दोस्तों नमस्कार, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। First of all, on behalf of Society for Communal Harmony, let's pay tribute to Shahid Allah Baksh Soomro on his 79th martyrdom day. जैसा कि आप जानते हैं, वो एक लेजेंडरी लीडर थे जिन्होंने पूरी जिंदगी सेकुलर पॉलिटिक्स और कोएग्जिस्टेंस कल्चर जैसे विचारों को सींचने के लिए समर्पित किया। मैं रणधीर कुमार गौतम सोसाइटी फॉर कम्युनल हार्मनी के द्वारा आयोजित आज के गोष्ठी, जिसका शीर्षक है अल्लाह बख्श एंड इंडियन नेशनहुड, आप सभी को स्वागत करते हुए बहुत ही खुशी हो रही है कि आज हमारे साथ महत्वपूर्ण विचारक, गंभीर चिंतक अपनी बातों को रखने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं। मैं स्वागत करना चाहता हूं आज के चेयर विजय राव साहब को और आज के स्पीकर अनिल नौरिया जी, जो एक राइटर हैं और इतिहास के ऊपर, पॉलिटिक्स के ऊपर वो लिखते रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल से भी जुड़े हुए हैं। हम लोग कोशिश करेंगे प्रोफेसर शमसुल इस्लाम जी के पास जुड़ने के लिए। उनकी थोड़ी व्यस्तता है, थोड़ी देर में हो सकता है वो हमारे साथ जुड़े और अपनी बातों को रखें। और इसके साथ साथ सोसाइटी फॉर कम्युनल हार्मनी से जुड़े हुए काफ़ी लोग हमारे साथ जुड़े हैं, उन सबों का भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और सारे दर्शक और श्रोता जो हमें यूट्यूब प्लेटफॉर्म से सुन रहे हैं और देख रहे हैं, उनको भी धन्यवाद देता हूँ कि वो आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सोसाइटी फॉर कम्युनल हार्मनी एक संस्था है जो 1990 में तकरीबन 30 साल पहले डॉक्टर श्री दिसंबर नाथ पांडे और थियोलॉजियन स्कॉलर अली मियां नदवी के द्वारा बनाई गई संस्था है, जिनका मकसद लोकतंत्र, हमारे साथ जो पूरे लोग हैं, हम सारे लोग जस्टिस, इक्वलिटी, पीस, जो भी हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में जो फिलॉसफी है, उसको एक्चुअलाइज करने के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। और इसी को ध्यान में रखते हुए सोसाइटी फॉर कम्युनल हार्मनी कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स को कर रही है, जिसमें इंटरफेथ डायलॉग, अवेयरनेस बिल्डिंग एमंग यूथ, पर्टिकुलरली स्टूडेंट्स। इसके साथ साथ हम इंटरवेंशन भी करते हैं कॉन्फ्लिक्ट और रिलीफ में, जो भी कम्युनल वायलेंस से ग्रसित लोग हैं, उनको हम कोशिश करते हैं उन तक हम पहुंच के और उनका मदद करने का। आज जैसा कि आप जानते हैं 14 मई है और अल्लाह बख्श सुमरो की डेथ एनिवर्सरी है। और आज़ाद भारत से पहले जब अखंड भारत था, तो उस समय अल्लाह बख्श एक ऐसे लीडर के नाम से जाने जाते थे, जिनका मकसद हिंदू मुस्लिम एकता, अखंडता और कम्युनल पॉलिटिक्स के खिलाफ एक बड़ा चेहरा के रूप में वो उभरे। और उनके विचार की प्रासंगिकता आज इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आज भारत हो या पाकिस्तान, कम्युनल रेथोरिक, वेजिटेरियन पॉलिटिक्स बहुत ही डर कर गया है और एक नाम मात्र डेमोक्रेसी है। तो इसी चीज़ों के संदर्भ में आज हम बख्श सुमरो जी को याद करेंगे, उनके विचार को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले Yes. So I'll just read out written, because I put my speech in writing, and I will just read it out and make the remarks as I go along. So the 79th anniversary of the assassination of Allah Baksh falls today on May 14, 2022. Why is it important to remember Allah Baksh and to commemorate
this day. All communalism thrives on stereotypes. Many of the stereotypes being circulated in the colonial interest have also strengthened communal stereotypes and eliminated important unifying strands from modern Indian history. In an English language play, a reference was once made to a hippopotamus in the room as something everyone is aware of, but no one wishes to acknowledge. In studies on Indian partition, Allah Baksh is one such hippopotamus, but with a difference. In his case, there is little awareness even of his existence or of the non-stereotypical forces that he represented and continues to symbolize. Allah Baksh was not in the Congress, but like Mirza Ismail in the South, this stout nationalist was sympathetic to its aspirations. In Sindh, he headed a group called the United Party or Ittihad Party. Allah Baksh was premier of Sindh after that province was carved out of the Bombay Presidency and given a legislative assembly under the Government of India Act 1935. After the Muslim League's resolution in March 1940 asking for the partition of India, Allah Baksh organized the Azad Muslim Conference, also known as the Independent Muslims Conference, in April 1940 to oppose the partition demand. This conference was held between April 27 and April 30th, 1940 in Delhi in the Queen's Garden, Malikabad, opposite the Old Delhi railway station. The Azad Muslims Conference rejected the demand for Pakistan. The conference created a stir. It was widely attended by leading Muslims from across the country. Maulana Azad has written effusively about it. Maulana Azad wrote, the conference was held, quote, I'm quoting Maulana, the conference was held with great eclat and 1,400 delegates came to Delhi from all quarters of India. The session was so impressive that even the British and the Anglo-Indian press, which normally tried to belittle the importance of nationalist Muslims, could not ignore it. They were compelled to acknowledge that this conference proved that nationalist Muslims were not a negligible factor. Even the Statesman and the Times of India wrote leading articles on the conference. This is from Maulana Azad's book, India Wins Freedom, 1988 edition, page 49. Knowledge of events such as this conference would serve as an eye-opener to those who, often misled by the Hindutva stereotype, seek to paint Muslims with the Pakistan tag. Wilfred Cantwell Smith, who was no friend of the Congress and one of those who
was to popularize the Pakistan idea among the organized communist left of the 1940s, admits in his book Modern Islam in India, published in Lahore in 1946, that when Allah Baksh organized the Azad Muslims Conference, it was reflective of Muslim opinion in India. Smith writes, quote, the delegates representing at that time probably still the majority of India's Muslims came to protest against the Pakistan idea and against the use made of the Muslims by the British government and others as an excuse for political inaction. Unquote. This is from Cantwell Smith's book, page 279. This conference was followed by several regional conferences of Muslims who rejected the two-nation theory. These included the Bihar Political Muslim Conference held at Sonhala on 2nd July 1940 under the chairmanship of S.A. Brelvi. Then the UP Azad Muslim Conference, which was held at Lucknow on 20th July 1940 under the chairmanship of Abdul Majid. The Anti-Communal Conference held at Lahore on 9th March 1941 under the chairmanship of Frontier Gandhi Khan Abdul Ghaffar Khan, and the South Indian Anti-Separation Conference at Kumbakonam on June 8, 1941 under the chairmanship of M.Y. Sharif. All these conferences stressed the risks and dangers involved in the partition scheme. Anglo-centric historiography, as well as Hindutva writings and propaganda, have combined to eliminate such memories from the Indian consciousness. Interestingly, Sindh was treated as a special case by the Congress in the matter of withdrawal from the provincial assemblies after the start of the Second World War. Both Gandhi and Maulana Azad had an appreciation of the difficult circumstances in which Allah Baksh functioned and the courage that he displayed in resisting communalism. Rajendra Prasad observed in a letter in August 1941, quote, Bapu is quite clear that congressmen in minority provinces were those where the Muslim community is in a minority. So Rajan Babu writes, Bapu is quite clear that congressmen in minority provinces must withdraw from the assemblies because their governments are cooperating in the war effort. So far as Sindh goes, Bapu thinks he must respect the wishes of Maulana Sahib, that is of Maulana Azad. The latter is emphatically of the view that Allah Baksh must be fully supported by congressmen and the latter must not withdraw. That is when the Congress governments resigned from the various provinces in which they were ruling after the British declared war and involved India in the Second World War without consulting Indian opinion. So, can you hear me? Yes, sir. Yeah. So the Congress government resigned.
But an exception was made for Sindh, because here Rajan Babu writes that Gandhiji was of the view. Right, go on. Yes, sir. Because Gandhiji was of the view that we should respect the wishes of Maulana Azad. Maulana Azad is emphatically of the view that Allah Baksh must be fully supported by congressmen and the so this was why an exception was made for Sindh. Allah Baksh rebuffed attempts to get him to join the Muslim League and remained strident in his opposition to the plan to divide the country. This is admitted even by G.M. Said in his last testament, which was published from Mumbai in September 2001 in the journal Sindh Rises. Not surprisingly, when the Cripps mission came to India in March 1942, it sought to ignore the point of view and the kind of forces that Allah Baksh represented. Cripps had professed to meet various sections of political opinion in India, but he kept Allah Baksh waiting for several days until Maulana Azad was moved to protest. Even then, Cripps had only a perfunctory meeting with Allah Baksh. The British leadership then, as now later on in the Middle East, Iraq, etc., was simply not willing to recognize those who did not conform to certain predetermined Anglo-centric stereotypes. When the Quit India movement started in August 1942, Allah Baksh was still Premier of Sindh. Churchill's unsympathetic statement in the House of Commons on September 10 showed insensitivity to Indian public opinion. It offended Allah Baksh enough to induce him to return all honors he had received from the British. He was Khan Bahadur Allah Baksh, so he returned that honor. His letter to the Viceroy ranks as one of the famous documents of the Indian freedom movement. On October 16, he was removed from office by the governor on the ground. This is on 16th October 1942. He was removed from office by the governor on the ground that he had lost the latter's confidence. At this time, Allah Baksh still commanded a majority in the legislature. This was one of the early cases of abuse of governor's powers. According to Louis Fisher, the real reason for Allah Baksh's removal was the fact that he returned his titles to the British government. This is from Louis Fisher's book, Empire. After Allah Baksh's dismissal, the governor appointed in his place a wealthy and reliable knight who presently joined the Muslim League, forming a League coalition ministry. Allah Baksh earned the praise of both Gandhi and Subhash Bose. The distinguished journalist M.S.M. Sharma observed in his Peeps into Pakistan that Allah Baksh and Gandhi had come very close. Yusuf Merali, the famous Bombay socialist and freedom fighter, wrote that the Allah Baksh ministry, though not strictly a Congress ministry, had decided to implement the Congress program. This is from Yusuf Merali's article in the Congress Socialist on 26 March 1938. Typically, the Allah Baksh ministry had decided
not to accept salaries beyond rupees 500. A few months later, after his dismissal in October 1942, a few months after that, on 14th May 1943, that is on this day, today, 14 May 1943, Allah Baksh was murdered. The significance of this murder as a milestone in the path to the partition of India is obvious. अगर आप पाकिस्तान का नक्शा देखें तो जो सिंध की पोजीशन है और पंजाब की पोजीशन है वो ऐसी है कि अगर इन दो प्रोविंसेस में से एक भी अगर मुस्लिम लीग के साथ ना हो तो पाकिस्तान अंग्रेज सरकार पाकिस्तान बना नहीं सकती, क्योंकि फिर हिंदुस्तान की कंटिग्यूटी, लैंड कंटिग्यूटी होती बलूचिस्तान की के साथ और NWFP के साथ, जहां कांग्रेस का जोर था। तो इसलिए कॉलोनियल गवर्नमेंट के लिए बहुत ज़रूरी था उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर उनको डिवाइड एंड रूल करना था, कि सिंध में से ये जो यूनिटी की बात अल्लाह बख्श रिप्रेजेंट करते थे उसको ख़त्म किया जाए। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में अल्लाह बख्श के मर्डर को और सिंध की जियोग्राफिकल पोजीशन को और जो पॉलिटिक्स के जो उस वक्त हालात थे उस कॉन्टेक्स्ट में इस असैसिनेशन को समझना चाहिए। As long the significance of this murder as a milestone in the path to the partition of India is obvious. Pakistan was not conceivable so long as either Sindh or Punjab was ruled by a party that did not support partition. As long as this was the case, there was geographical contiguity between the Congress-dominated NWFP and Baluchistan on the one hand, and the rest of India on the other. Once Allah Baksh, with his known popularity in Sindh, was eliminated, and a ministry owing allegiance to the League firmly installed in the province, geographical contiguity between Baluchistan and the NWFP and the rest of India became dependent solely on the League not coming to power in Punjab. Jinnah's silence on this murder was widely noticed and commented upon. N.A. Khuru, the president of the Sindh Muslim League, was one of those accused of the murder of Allah Baksh. He was acquitted on grounds similar to those on which Savarkar was to be acquitted in the Gandhi assassination case some years later. That is, that when the evidence against an accused comes from a co-accused, then you need a corroboratory witness. So since that corroboratory witness was not forthcoming in the Allah Baksh assassination case, Khuru was acquitted. Similarly, Savarkar was acquitted for the same reason in the Gandhi assassination. So both these assassination cases were not cases of zero evidence. They were cases where the second witness to corroborate the evidence coming from the co-accused did not come forward. The second witness didn't come, and that because of that lack of corroboration, the accused was acquitted in both cases. So this is a similarity between the Allah Baksh assassination case and the Gandhi murder case. So N.A. Khuru, the president of the Sindh Muslim League,
who was one of those accused of the murder, was acquitted on grounds similar to those on which Savarkar was to be acquitted in the Gandhi assassination case some years later. Viceroy Weaver recorded in his journal the following conversation with Hugh Dow, the governor of Sindh, upon Kuru's acquittal in 1945. Quote, "We spoke of the acquittal of his ex-minister Kuru, who will now probably become premier before long, to be suspected of murdering one's enemies, or even to be known to have done it, is a qualification rather than a hindrance in Sindh politics." Weaver, the Viceroy's Journal, page 164. Some 4.5 years after the dismissal of the Allah Baksh ministry in Sindh, came the resignation of Hizra Hayat Khan, Diwana, Unionist Party ministry in Punjab. Hizra Hayat Khan headed the Unionist Party ministry in Punjab, and he resigned some 4.5 years after the dismissal of the Allah Baksh ministry in Sindh. This followed a Muslim League-led agitation in that province, in Punjab. The anti-partition parties, which hitherto still had a majority in the Punjab Assembly, had united to keep the Muslim League out. But the events of early 1947 in Punjab made it impossible for this government to continue. And once Hizra Hayat's government was gone, it became politically possible to mark out Pakistan on the map. Only the lines remained to be drawn. Most Indian freedom fighters were in prison when Allah Baksh was murdered 79 years ago during the Second World War. When they came out of prison in 1944-45, they remembered many friends and comrades who they had lost in the interregnum. Allah Baksh was one of them. But because of the unfortunate timing of his death, the special national recognition to which this outstanding martyr of secularism and freedom was entitled did not come to him. Events moved too fast for that. There were the elections of 1946, held as was usual with colonial elections on a limited franchise. Then came partition and the vast population movements from Sindh and the other provinces of India and Pakistan. The latter, with its emphasis on the two-nation theory, saw no reason to recognize the space that Allah Baksh represented. For some reasons, perhaps related to his early death and the fast pace of the events that followed, his legacy faded also in India, neglected by both Hindus and Muslims. Now I'll just conclude by reading out to you two passages from the speech which Allah Baksh delivered at the Azad Muslim Conference, which he had organized in New Delhi in April 1940. So let me just read two passages. It's a long speech, but I will just read two small passages to you to give you a flavor of the kind of man that Allah Baksh was. He said in the course of his speech, "No segregated or isolated regions, but the whole of India is the homeland of the Indian Muslims, and no Hindu
or Muslim or any other has the right to deprive them of 1 inch of this homeland. So his argument was that, look, Muslims are of the whole of Hindustan, and Hindustan belongs to all of us. Can you hear me? Yes, sir. We can hear you. Hindustan belongs to all of us jointly. So there is no question of anyone being able to deprive us of this right to a united India. Then the other points which I would like to quote from his speech is here. He says, can you hear me? Yes, sir. Freedom to me, gentlemen, spells not merely the freedom of a group or a class or community, but of the whole nation in all possible spheres of life, and to secure that a fair adjustment of the general needs of the country and the various communities will have to be undertaken in a spirit of generosity and toleration, and I may also say of right brotherly affection for one another. Whenever our faiths, whatever our faiths may be, we must all live together in our country in, in an atmosphere of perfect amity, and our relations should be the relations of several brothers of a joint family, various members of which are free to profess whatever faith they like without any let or hindrance, and all of whom enjoy equal benefits of their joint property. It is only in an atmosphere such as this that India, the home of the Hindus, Muslims, Christians, Sikhs, Buddhists, Jains, Harijans, Brahmins, Jews, and Parsis and others, shall not merely attain its freedom, but God willing, it shall always retain and preserve it against any power under the sun. This was Allah. थैंक यू सर. थैंक यू सो मच फॉर के हैं जिन्होंने पूरी जिंदगी उन्होंने अला बख्श को समझने के लिए लगाया, और उन्होंने एक काफ़ी शानदार किताब जो अला बख्श को समझने के लिए बहुत ही ज़रूरी है, एपोस्टल ऑफ सेकुलर हार्मोनी. तो मैं आदरणीय कादिम हुसैन सुमरो साहब से, जो आजाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें जो कम्युनल क्वेश्चन पे जो उन्होंने सवालनामा बनाया था और तमाम बड़े सगीर के लोगों को उन्होंने सवालनामा भेजा था, अगर उसको अब भी पढ़ा जाए और उस पर अमल किया जाए तो कोई इस बड़े सगीर में जंगो जिदाल नहीं हो. और लेकिन क्योंकि मुफादात होते हैं, हर किसी का अंदाज सियासत अलग होता है, और ब्रिटिश का ये था, और उन्होंने कहा कि फॉर आवर डिवाइड एंड रूल वी हैव यूज्ड एन इंस्ट्रूमेंट दैट वाज चीपेस्ट वन एंड डेंजरस वन, इट वाज किलर्स. तो वो उन्होंने अपना हथियार इस्तेमाल किया उस तरीके से, लेकिन अल्लाह बख्श सामने उसके सामने खड़ा हो गया. तो उसको चीफ मिनिस्टर से हटाने के बावजूद भी उनका जब तक इसको असैसिनेट नहीं किया जाता तब तक हमारे मकासद जो हैं बड़े सगीर में पूरे नहीं, क्योंकि ये आदमी जो है नॉन कम्युनल मुस्लिम की जो ऑर्गेनाइजेशन थी, आजाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, उसको लीड कर रहा था बड़े से. और
ये ऐसी चीजें थी जो नापसंद थी, जो अमन नहीं चाहते थे, जो नहीं चाहते थे कि, क्योंकि एक बात है, जहाँ वाइज मैन होंगे वहाँ अमन होगा, जहाँ वाइज मैन नहीं होंगे वहाँ झगड़े फसाद सारा होगा। अल्लाह बख्श अमन चाह रहा था, अल्लाह बख्श बड़े सगीर में प्यार मोहब्बत चाह रहा था, लेकिन क्योंकि दोनों बड़ी जमायतें थी, लोग बड़े उनके साथ थे, तो वो खुद को महसूस कर रहे थे कि अल्लाह बख्श का आवाज शायद जो है वो हमारे जो मकासद है, इंटरेस्ट है, उनके लिए नाकाबिल कबूल है। सिर्फ उनको ही नहीं, ब्रिटिश के लिए बेसिक मसला, ये बड़े सही का मसला जो है, यहाँ का लोकल मसला नहीं था, ये इंटरनेशनल मसला था, बैनुल अक़वामी मसला था। क्योंकि अगर अल्लाह बख्श का प्रोग्राम आ जाता है तो ये आजकल जो आप देख रहे हैं, फला मजहबी, ये शाम में जो हुआ, ये इराक में जो हुआ, ये मुख्तलिफ मिस्र में हुआ, मुख्तलिफ ममालिक में, यहाँ वो नहीं होता, क्योंकि उसकी जड़ें लाइक ऐसे जैसे दारुशिकू और औरंगजेब का जो था, वो उसमें औरंगजेब का एक अपना ख्याल था और दारुशिकू का जो ब्यूरोक्रेसी, जो मुस्लिम ब्यूरोक्रेसी, वो चाहती थी कि वो जो है नॉन कम्युनल दारुशिकू का प्रोग्राम जो है आएगा तो हमारी ताकत कमजोर हो जाए। उन्हें पता नहीं था, क्योंकि वो वियनरी लोग नहीं होते। इक़्तिदार के वो ट्रॉटस्की ने कहा है, हीरोज आर इंस्टेंटली ब्लाइंडेड बाय देयर ओन इफिजन्स। वो हीरो बन गए थे, वो फकीर नहीं थे। अगर फकीर होते तो उन्हें एहसास होता इंसानियत का, लोगों की मोहब्बत का, प्यार का, और यही अल्लाह बख्श का मिशन था कि बड़े सगीर पुरअमन हो, मोहब्बत वाला हो, और रिवाइविंग ए डोरमेंट सिविलाइजेशन, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, जहाँ तमाम बड़े सगीर की सिविलाइजेशन, उसको रिवाइव करना चाहते थे। तो लोग वो नहीं चाहते थे कि इंडस वैली का हुस्न बहाल हो, इस तमाम बड़े सगीर का हुस्न बहाल, उसके खिलाफ थे। और यकीनी तौर पे अल्लाह बख्श को हटा दिया, नक्शे से हटा दिया, और जगत एस ब्राइट ने जो 1944 में बायोग्राफी लिखी थी अल्लाह बख्श, उसमें उसने बहुत सारी चीजें लिखी, और मेन रीजन यही था, वो जहां बड़े सगीर में अमन, रवादारी और प्यार का पैगाम था। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, कुछ हमारे दर्शकों का कुछ प्रश्न आप ले सकेंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। जी जी सर, मैं हूं आपके साथ। जी जी, जुड़े रहिए। बोले इंडिया में मुकावट है आला बख्श रणधीर सिंह जी, बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद। तो I have no question and query about it, but just trying to know about Allah Baksh Sahab and the sacrifices that he made for the secular tradition of Great India and freedom movement. So bas, that's all. And if anybody has any query, then you may ask. Thank you, Randhir. जी, मिनिती प्रधान जी, आप कुछ पूछना चाह रही है? जी, वेलकम वेलकम। Hello, am I audible? हाँ, you are audible. So I had actually a little bit one query. So thank you. Good evening, everyone, and thank you for the nice information. So I just wanted to ask Khadim Sahab,
it is his assassination has become almost 7 decades, like, no. So whether any proper investigation was done on that, and what was the result, and I just want to know a little bit about that. So if he can put some light on that, so it will be great. Thank you. जी बोलिए। जी उनके वालिद कॉन्ट्रैक्टर थे और अल्लाह बख्श ने क्योंकि उस सिटी से ताल्लुक रखता था, शिकारपुर, जो दुनिया की उस दौर में एडवांस जहाँ बैंकिंग था, सिस्टम था। और मजे की बात यह है कि ये जो हमारा सिस्टम है ट्रांसफर ऑफ मनी का, वो शिकारपुर शहर जो है, फ्रॉम शिकारपुर टू मॉस्को में उनका सिस्टम था। इतना एडवांस सिटी थे। उस माहौल में अल्लाह भले आगे बढ़े, लेकिन बदकिस्मती से उनके वालिद के वफात के बाद, क्योंकि उनके वालिद की वफात बॉम्बे में हुई और उनका जो वालिद था खान साहब मोहम्मद उमर सूमरो, उनकी कब्र भी बॉम्बे में है, वही उनको तदफीन हुई थी। तो इन पे जिम्मा आ गया और यंग एज में इन्होंने इलेक्शनें लड़ी। बड़े बड़े लॉर्ड्स जो इस इलाके में रहते हैं, शिकारपुर के साथ देख रहे हैं, वो ट्राइबल लॉर्ड्स ये वो, लेकिन उनको शिकस्त देके वो 1928 में डिस्ट्रिक्ट सक्खर के प्रेसिडेंट बने, when he was only 28 years, और 26 साल की उम्र में वो बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर बने। एक बात मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जो पेट्रोमनी का यूरोप का कॉन्सेप्ट है, लेकिन उससे पहले अल्लाह बख्श ने 1934 में दिया था बॉम्बे लेजिस्लेटिव असेंबली में, उन्होंने खिताब किया था और कहा था वाटर इज लिक्विड मनी, टू थ्रो अवे द यूजिंग ऑफ वाटर, टू थ्रो अवे द टैक्सेस। ये इतना बड़ा विजनरी उस उम्र में, 34 साल की उम्र में, ऐसा बंदा बहुत ही कम होते हैं। और उन्हें 43 में तो ईयर उनकी एज थी जब उन्हें असैसिनेट किया गया। 38 साल की उम्र में वजीर आला बने, 37 साल की उम्र में वो सिंध असेंबली के मेंबर बने, 28 साल की उम्र में वो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के प्रेसिडेंट बने। इसी तरह अच्छा, फिर वो सादगी का पुतला था जो है, कभी प्रोटोकॉल नहीं लेता था एज ए चीफ मिनिस्टर। तो वो इसको कहें कि जाती उनका किरदार उत्तम था और इखलाक भी उत्तम था और विजन उसका कमाल का था। मैं दावा से कहता हूँ कि 1940 की उसकी जो तकरीर है जो उन्होंने आजाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की दिल्ली में की थी, वो इतनी विजनरी है। अगर उस पे अमल होता तो कोई कश्त खून नहीं होता जो है। 1940 की उसकी तकरीर है, कमाल की। और मैं नहीं समझता बड़े सगीर के किसी लीडर ने इतनी विजनरी दूरअंदेशाना थॉट्स दिए होते हैं, फिक्र दिया हो और प्रोग्राम दिया हो। जी तो नहीं, एक्चुअल वो जो थे सिंध के सूफियाना जो रंग है उसका असर था, क्योंकि सिंध धरती तसव्वुफ की वारिस है, अमन की वारिस है, सनातन धर्म की वारिस है, तो उसमें सनातन धर्म का असर था। और इंडस वैली का वो जो प्यार मोहब्बत का पैगाम था उसका असर था। बड़े सगीर के किसी सियासी लीडर का कोई असर नहीं था। वो मैं ये तो नहीं कह सकता कि उनकी सोच उनसे बड़ी थी या थी, लेकिन वो अपने हवाले से
किसी से कम नहीं थे पढ़े लिखों से जो है, लेकिन उसका सिंध का जो अमन का पैगाम था, वादी सिंध का फ्रॉम मानसरोवर टू सिंधु सी तक जो पैगाम रहा है वो सनातन धर्म का रहा है। सनातन धर्म का पैगाम जो है, सनातन धर्म इज रिलेटेड टू नेचर एंड एनवायरनमेंट। तो वो उस मिट्टी की पैदा थी, उस सरजमीन की पैदा थी जिसका पैगाम अमन और मोहब्बत और प्यार है। कोई किसी लीडर का उस पर असर नहीं था। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े और अपना वक्त, कीमती वक्त हमें दिया आपने। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। नहीं, आपकी बड़ी मेहरबानी जो हमारे जो है ख्यालात लोगों तक पहुंचाए। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो बाकी हमारे श्रोता अगर कुछ टिप्पणी करना चाहते हैं तो कुछ। ये जो सवाल पूछा गया था, मिनती जी ने पूछा था उससे। हाँ हाँ, मिनती जी ने पूछा था जी। तो इसमें मैं कुछ कहना चाहूँगा कि वो जो जज जिसने अल्लाह बख्श मर्डर केस ट्राई किया था, तो उनको मैंने कांटेक्ट किया। उनका नाम था बुर्जोरजी पेमास, बुर्जोरजी पेमास। और वो बाद में जाके बॉम्बे के चीफ सेक्रेटरी रिटायर हुए थे। बॉम्बे अनडिवाइडेड बॉम्बे के चीफ सेक्रेटरी की हैसियत से वो रिटायर हुए। और उन्होंने अपना जजमेंट में लिखा कि ये जो हालांकि उनको अपीट किया जा रहा है I cannot say ever after considering on the evidence that there is no suspicion against him. Mere suspicion is, however, no evidence. All that I can say is that the trial has not completely cleared him of all suspicion of complicity in the crime. तो इन्होंने कहा कि मैं अपील तो कर रहा हूँ क्योंकि एविडेंस जो चाहिए वो पूरी नहीं है, लेकिन there is suspicion and the trial has not cleared him of all suspicion. तो ये जो लाइन उन्होंने लिखी, इसके खिलाफ खुदी साहब हाई कोर्ट गए जब अपील उनको किया है तो ये लाइन खुली, तो हाई कोर्ट ने वो लाइन हटा दी। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। एक यूट्यूब पे एक प्रश्न है एग्रेसिव नेशनलिज्म के ऊपर, किस तरह का नेशनलिज्म का क्या आइडिया रहा है, किस तरह का अप्रोच? उनका अप्रोच ये था कि ये एक जो उन्होंने मैंने पैसेज जो उनकी 1940 की तकरीर से पढ़ के सुनाया कि इंडिया बिलोंग्स टू ऑल द कम्युनिटीज and the whole of India belongs to all the communities. So, and we have to live together in amity and with generosity towards one another. तो ये उनका नोशन था। और इंडिया विद इट्स जियोग्राफिकल बाउंड्रीज इज वन यूनिट, वन नेशन। तो इसको खादिम साहब ने अभी एक फोटो भेजा है मैसेंजर में, वो कुछ मैं दिखाना चाहता हूँ। जी, बहुत बहुत। और उन्होंने एग्रेसिव कम्युनलिज्म के ऊपर क्या बयान रहा है वो वही भेजे हैं।
तो मैं पढ़ के एक बार सुना देता हूँ. उन्हें कहते हैं कि aggressive communalism was fatal to the growth of that feeling to brotherliness, good neighborliness, and common nationality, which were essential, not merely for the acceleration of a common national effort, but also for the maintenance of an atmosphere of peace, progress, and stability in the country. A fair adjustment of the general needs of the country and the various communities should be undertaken in a spirit of generosity and tolerance and of right brotherly affection for one another. Whatever our faiths, we must live together in our country in an atmosphere of perfect amity, and our relations should be the relations of several brothers of a joint family, the various members of which are free to profess the faith they like without any let or hindrance, and all of whom enjoy equal benefits of their joint property. Thank you, Khadim साहब. ये और एक मैसेज है जो इसका एक हिस्सा जी जी हमको सुनाना है, तो उसकी आगे की बात. थैंक यू.